Good evening to all ladies and gentlemen. We are all blessed to have Honorable President of India, Smt.Droupadi Murmu with us on this great day. With great pride and privilege, I extend warm greetings and hearty welcome to our guest of honor to Lakshadweep, famous for its exotic and sun-kissed beaches and lush green landscapes. Now, I request Honorable Administrator to felicitate the guest of honor by presenting a shawl and a memento as a token of our gratitude. Today we have gathered here in this beautiful island of Kavaratti, which is the capital of Lakshadweep and one of its most developed islands. Madam President, the Kavaratti Island is endowed with natural scenic beauty and serene and calm surroundings. Now, a brief introduction about our guest of honor. The life journey of the Honorable President started with being born to a Santali tribal family on 20th June 1958 in Ubarbeda village of Mayurbhanj district of Odisha. The Honorable Madam became the 15th President of India in 2022. She is the first person belonging to the tribal community and the second woman to hold the office of the President. She is also the youngest person to occupy the post and the first President born in independent India. She has also served as the Governor of Jharkhand and previously as a Minister of State to the Government of Odisha. Before entering public service, she worked as a junior assistant in the state government and then as a teacher until 1997. Ladies and gentlemen, the Honorable President has kindly agreed to grace this civic reception with her esteemed presence. Sri Praful Patel, our Honorable Administrator, whose deep sensitivity towards social issues led him to the path of social service, is also present here today. Sir earlier served as Minister of State for Home Affairs, State of Gujarat, before taking over as Administrator of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli. Shri Patel assumed the charge of Administrator of Lakshadweep in December 2020 and is leading the island territory with his untiring dedication and commitment for the welfare of the people. Now, I invite our Honorable Administrator to accord the official welcome to our guest of honor. Honorable Administrator, sir. भारत माता की। ऐसा नहीं चलेगा। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय आपने हमारे यहाँ पधारे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिगण, लक्षद्वीप के उपस्थित सभी पूर्व सरपंच, पूर्व जिला पंचायत, सरकारी अधिकारी, बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, जिसके लिए मुझे सदैव विशेष प्यार है,
ऐसे मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों और मीडिया के मित्रों, मुझे मित्रों ये लगता है, मुझे करीब करीब 2 साल 4 महीना यहां पे हुआ है, लेकिन 2 साल 4 महीने के दौरान 3-4 कार्यक्रम हुए हैं। सबसे अधिक सफल अगर कोई कार्यक्रम है तो वो आज का कार्यक्रम है। मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है एवं आनंद का दिवस भी है। कारण देश की प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे बीच पधारी है, यह हम सबका परम सौभाग्य है। मैं लक्षद्वीप प्रशासन एवं यहाँ की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, एक शिक्षिका से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आपका सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। आपने एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन आरंभ कर विधायक, मंत्री एवं राज्यपाल जैसे गरिमामय पदों को सुशोभित किया है। लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत आपका सार्वजनिक जीवन नारी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा जनजातीय स्वाभिमान का प्रतीक है। आपकी सादगी, आपकी विनम्रता, स्नेह वत्सलता और आध्यात्मिक चिंतन हम सबके लिए प्रेरणा का स्तोत्र एवं अनुकरणीय है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आपके आशीर्वाद से एवं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। संघ प्रदेश लक्षद्वीप भी विकास की इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर देश को साथ दे रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ प्रदेश है तथा देश का एकमात्र कोरल द्वीप है। इसके 36 द्वीपों में से केवल 10 द्वीप पे आबादी है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पिछले कुछ वर्षों में इस प्रदेश ने आशातीत उपलब्धियां हासिल की है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए यहां अद्यतन सुविधाओं से युक्त कई नए स्कूल एवं उच्च शिक्षा के संस्थान जैसे कि साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से शुरू किए गए हैं। लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहाँ के अस्पतालों को अपग्रेड करने की कार्यवाही की जा रही है। लक्षद्वीप में स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए पुडुचेरी में जो जिपमेर मेडिकल कॉलेज है उसके साथ भी टाइप करने हेतु कदम उठाए गए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, कोचिन पोर्ट अथॉरिटी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के सहयोग से लक्षद्वीप में पोर्ट और शिपिंग सेक्टर को मजबूत बनाया गया है। भारत सरकार की सागरमाला योजना के अंतर्गत भी कई परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहे हैं। लगभग 183 करोड़ रुपए की लागत से एंड्रोट में ब्रेक वाटर के रिस्टोरेशन तथा कल्पेनी में जेटी के विकास का प्रस्ताव पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त कड़मत, किल्टन एवं चेटलट में जेटियों के विकास एवं सौंदर्यीकरण तथा अगत्ती, कड़मत, कल्पेनी, कवरत्ती और मिनिकॉय में तटीय संरक्षण के संबंधित प्रस्ताव भी प्रक्रियाधीन है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि यहाँ के आबादी वाले सभी 10 द्वीपों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। लक्षद्वीप प्रशासन ने UIDAI पोर्टल पर मछुआरों के डेटा को 100% पंजीकरण कर लिया है।
और सभी मछुआरों को पीवीसी कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। लक्षद्वीप में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन एवं नल से जल परियोजना पर सक्रियता से काम किया जा रहा है। इस साल के अंत तक कड़मत, चेटलट, किल्टन एवं अंडोट में भी एलटीटीडी प्लांट चालू कर दिए जाएंगे। इन पर 172 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार से 2023 के अंत तक सभी आइलैंड पर शुद्ध पीने का पानी पीने की व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जल मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की लागत से कवरत्ती, अमनी, अगती, मिनिकॉय एवं एंड्रोट में एलटीटीडी प्लांट लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त कवरत्ती में 1 लाख लीटर क्षमता वाले ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर डिसैलिनेशन प्लांट निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। नल से जल परियोजना के अंतर्गत लगभग 70 करोड़ की लागत से लक्षद्वीप के सभी घरों में पेयजल आपूर्ति की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। हम भारत सरकार के सहयोग से अगती हवाई अड्डे का विस्तृतीकरण एवं मिनिकॉय में ड्यूअल पर्पज वाले नए हवाई अड्डे के निर्माण की योजना पर काम कर रहे हैं। काम बहुत तेजी से चल रहा है। इससे हमारी कनेक्टिविटी देश के अन्य हिस्सों से बढ़ जाएगी। हम कवरत्ती हेलीपैड को भी विकसित कर रहे हैं तथा सड़कों का चौड़ीकरण करते हुए उन्हें आकर्षक बनाने की प्रक्रिया भी चालू है। इस प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को एक नई ऊंचाई देने के लिए कड़मत और सुहेली में वाटर विला आधारित 2 एंकर प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं एवं मिनी कोय का भी आयोजन किया गया है। इससे यहाँ पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी। कनेक्टिविटी बेहतर होने से यहाँ के व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस संघ प्रदेश में सीवीड उत्पादन का बहुत बड़ा स्कोप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम इस प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में सीवीड उत्पादन का सबसे बड़ा हब बनाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इससे यहाँ के लोगों को, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर प्राप्त होगा। यही नहीं, हमने महिलाओं के विकास एवं उत्थान तथा सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए पंचायतों में भी 50% आरक्षण देने का आरक्षण प्रदान किया है। इससे यहाँ की महिलाओं को भी प्रदेश के विकास की योजनाएं बना सकेगी और इसके भविष्य की बागडोर संभाल सकेगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, यहाँ की टूना फिश प्रीमियम फिश है जो साउथ ईस्ट एशिया विशेषकर जापान में काफी निर्यात की जाती है। इसकी फिशिंग, स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग के लिए प्रशिक्षण एवं बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे कई कामों का प्रारंभ भी किया है। नेट कनेक्टिविटी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। इसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगभग 1072 करोड़ की लागत से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि करीब मई के अंत तक या तो जून तक ये काम करीब पूरा हो जाएगा और हमारी समस्या से हमें छुटकारा मिलेगा। इसके अतिरिक्त लगभग 36 करोड़ रुपए की लागत से 18 नए 4G टावरों की स्थापना की जा रही है तथा मौजूदा 19 3G साइटों को भी 4G में अपग्रेड किया जा रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम भारत सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं को अक्षरशः लागू कर रहे हैं तथा महत्वपूर्ण योजनाओं को तेजी से क्रियान्वयन भी कर रहे हैं।
आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ आए और अपना मार्गदर्शन देने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए मैं संघ प्रदेश प्रशासन एवं यहाँ की लोगों की ओर से आपका हृदय से आभारी हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हम सब पर अपना स्नेह बनाए रखें और अपना मार्गदर्शन देते रहे। इसी शब्दों के साथ आभार, धन्यवाद। भारत माता की मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम। धन्यवाद। Thank you, sir, for your emphatic remarks. Now, ladies and gentlemen, we are about to witness a new milestone in the development journey of Lakshadweep. Sufficient availability of fresh drinking water has always been a challenge in the islands. The Government of India in the recent past has taken many steps to address this issue. Installation of NIOT desalination plants is one such step. Ladies and gentlemen, a small video. National Institute of Ocean Technology, an autonomous institute under the Ministry of Earth Sciences, strives to fulfill the nation's needs by means of developing ocean technology for freshwater, food, ocean state forecast, technical consultancy services, and transfer of technology. MOES NIOT has developed low-temperature thermal desalination technology to satisfy the drinking water needs of UT Lakshadweep. MOES NIOT took responsibility of overall project from design to commissioning and established LTTD plants at Kavaratti in 2005, Minikoy and Agatti in 2011. These plants are being maintained by the local administration with locally trained manpower, and the produced freshwater is being supplied continuously to the local communities since commissioning. The LTTD technology works on the principle of temperature gradient available in ocean. Warm water at 28 degrees Celsius is evaporated at low pressure of 27 millibar, and the evaporated vapor is condensed using cold water at about 12 degrees Celsius drawn from the deep sea at about 400 meters water depth in the ocean. This technology is environmental friendly, less maintenance, and best suited for coral islands of UT Lakshadweep. Due to the success of these plants, the administration of UT Lakshadweep approached NIOT for setting up of LTTD plants in 6 more islands. NIOT has now established 2 more plants with 150,000 liters per day capacity in Kalpeni and Amini Island of UT Lakshadweep. Both the plants are commissioned after integration and generate fresh water. It is a proud moment for the entire Lakshadweep community that the Honorable President of India, Smt.Droupadi Murmu, is inaugurating the LTTD plants at Amini and Kalpeni. The drinking water needs of the people in these 2 remote islands will be satisfied, thanks to technology in service of society. Now, I request our esteemed guest of honor to oblige the people of Amini and Kalpeni Islands by inaugurating the much-awaited desalination plants with her blessed hands by pressing the remote button. People from Amini and Kalpeni are very much delighted as they join us through a video link to witness this historic occasion. Now, with utmost respect, I would request our guest of honor, Madam President, to enlighten us with her gracious words. Ladies and gentlemen, the Honorable President of India. Administrator of the Union Territory of Lakshadweep, Shri Prafulla Patel ji,
distinguished guests, ladies and gentlemen, and my very, very nearest and dearest, sweetie, lovely children of Lakshadweep. Lakshadweep निवासीगले नमस्कारम. I am overwhelmed with happiness and gratitude after your elegant and traditional way of welcome. You are known for your generous hospitality and strong patriotism. I am indeed delighted to be here in this charming island amongst you on this momentous occasion. The name of this place, as you know, comes from the Sanskrit term which means 1,00,000 islands. This also means that there must have been so many islands in those ancient times. As it is cut off from the mainland, there was no human population here for long. But a sense of adventure and enterprise must have drawn people to this archipelago. Living in this serene atmosphere, people of Lakshadweep also have a serene mind frame. The society here believes in harmony. In the mainland, we remember that among the few parliamentarians who had a long and distinguished career, there was Sri P.M. Syed from Lakshadweep Islands. You elected him continuously from 1967 to 2004, and this fact shows your preference for accord. I am glad that with a vision to develop the islands, the Lakshadweep administration has been pushing for reforms to bring a total shifts in the development trajectory of the islands during the last few years. Your administrator, Sri Prafulla Patelji, is known for his exceptional dynamism and also a vision for a better society. Apart from giving a push to infrastructural development, right sizing of government, and encouraging private sector participation, the Lakshadweep administration deserves a special praise for setting up desalination plants in many islands, two of them for Amini and Kalpeni Islands. I have just inaugurated to provide drinking water to people. I am sure that these steps will create employment generation and livelihood opportunities with focus on priority areas such as fisheries, agriculture, tourism, and physical infrastructure. The main focus of the administration and the governments of India is to position Lakshadweep as a unique tourist destination in the world. Lakshadweep Island have high potential for tourism, as these are blessed with scenic beauty of white sand beaches, coral, and diversity marine ecosystem. The administration is engaged in the development of high-end ecotourism projects at Kadmat, Minikoi, and Suheli as anchor projects under the aegis of Niti Aayog. Its vision is to establish a robust base for maritime economic growth with tourism development. It is a matter of pride that India's first water villas are going to be built in the blue lagoons of this Union territory. These innovative initiatives in the field of tourism will certainly boost the face of tourism in a big way. More importantly, it can emerge as a model of ecotourism for the whole world. I am told that special
emphasis is being laid on conserving the nature with the development. In order to modernize the fisheries sector and improve the economic status of the fisheries communities are the ICR National Bureau of Fish Genetic Resources and Department of Fisheries are making efforts to expand rearing technology through community aquaculture for enhancing the income of native women islanders. A facility called Germoplasm Research Center for Marine Ornamentals is established at Agatti Islands. It is indeed hand-holding the community aquaculture units maintained by women. This is a unique venture in which science and social development is taken up hand in hand with local resources. Dear sisters and brothers, as you are well aware, Lakshadweep has huge potential for developing the seaweed industry. Cultivation of seaweed in Lakshadweep will drastically reduce the imports bill of pharmaceutical companies and hotel industry which are banking on foreign products. Efforts have already started in Lakshadweep with participation of the local community, women, SHGs, island cooperative societies, and private entrepreneurs. Lakshadweep can become the seaweed capital of India in 5 years. It is rightly said that the investment in knowledge pays the best interest. Following these principles, the Lakshadweep administration has established 5 colleges. This union territory provides state-of-the-art facilities for school children. Lakshadweep has a better teacher-pupil ratio than most other places in our country. I appreciate the administration for its commitment and dedication to improve the school education system. To empower students with vocational, employable, and entrepreneurial skills as envisioned in the National Education Policy 2020, the Department of Education runs digital literacy courses in the schools of Lakshadweep. I am confident that these efforts of the Department of Education will help children of this geographically insular region achieve their dreams. Talking of children of Lakshadweep, let me tell you that I was overjoyed when Kumari Mubasina Mohammed brought Lawrence to the nation by winning 2 silver medals in the 4th Asian Youth Athletics Championships held at Kuwait last year. She has also been selected to represent India in the 5th Asian Youth Athletics Championship scheduled at Tashkent in Uzbekistan next month. It is also satisfying to learn that the Ministry of Youth Affairs and Sports has approved the establishment of a Khelo India Center at Amini Island. Football is selected as the training discipline and a football academy is established to provide regular coaching. I look forward to boarding footballers from Lakshadweep playing at national and international levels. Dear sisters and brothers, it is quite heartening to know that the administration has started the development of 5 hospitals in various islands of Lakshadweep. This will improve the health infrastructure here and reduce dependency on the mainland for health care requirements. It thus follows the path of Atmanirbhar Bharat. In today's era, it is crucial to have internet access for the overall development of any region.
Keeping that in mind, Prime Minister Narendra Modi has already awarded a submarine optical fiber capable project in Lakshadweep, and it is a matter of joy that it will be completed within a couple of months. Since Lakshadweep is a geographically isolated place, the question of the supply of electricity may require extra consideration. In the spirit of Atmanirbhar Bharat, I envision development of alternative sources of energy which will safeguard and environment of these beautiful islands and also show the world a way for eco-friendly development. Dear sisters and brothers, I would like to conclude by saying that I am grateful for the extraordinary work and affection of the people of Lakshadweep. It will cherish my first visit to this union territory for the rest of my life. I wish you all the very best to the people of Lakshadweep. मैं जब आ रही थी, मैं जब उतरी एयरपोर्ट में, वहां से लेकर के राजभवन तक बच्चे त्रिरंगा का झंडा लहराते हुए रास्ते में खड़े हुए थे और यहाँ का संस्कृति परंपरा के साथ मुझे स्वागत किया गया। मैं पूछ रही थी एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल जी से कि आज तो ऐसे हॉलीडे नहीं है, बच्चे रास्ते पे पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक खड़े हैं। उन्होंने बोले नहीं, आज आप आ रहे हैं इसीलिए बच्चे खुशी से रास्ते पे खड़े थे आपको देखने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, सबसे प्यार करती हूँ, लेकिन क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, बहुत लवली होते हैं और अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा बच्चों को पसंद करती हूँ। मैं खुशी हूँ, मुझे खुशी है कि बच्चों के लिए आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने, प्रफुल्ल जी ने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। बच्चों का विकास देश का विकास होता है, इसीलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जब से प्रेसिडेंट बनी तब से मुझे लगता है मैं 20 या 22 ऐसे स्टेट मैंने घूमी, लेकिन लक्षद्वीप मेरे लिए जरूर एक यादगार का स्थान होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जैसे शांत है, सुशील है, ऐसे मुझे बताया गया है, ऐसे कर्मठ भी है, साहसी भी है। मैं उनके भविष्य का उन्नति के लिए कामना करूंगी। जैसे मैंने देखा और प्रफुल्ल पटेल जी का भाषण भी सुना कि बहुत सारे विकास का काम बहुत ही प्रगति से चल रहा है, मुझे लगता है। और ये लक्षद्वीप दूसरे स्टेट के तरह आगे बढ़ेगा, केवल पढ़ाई में नहीं, खेल कूद हर चीज में और आगे बढ़ेगा। और ये लक्षद्वीप का नाम तो रोशन करेगी ही, साथ ही साथ देश का नाम भी रोशन करने वाला है। इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लक्षद्वीप। All may rise for the national anthem.
Thank you.